location, resident of Shahkot, 1 hour distance from hospital. She is married for 13 years. This is first consanguineous marriage of both partner. Her blood group was not known to my patient. She is para 2 with 3 miscarriages with no alive issue. Last miscarriage 4 months before. Her first day of last menstrual period 22nd December 2020. Presented through OPD 2 days before today for workup and evaluation of preterm delivery and recurrent miscarriages. As my patient is para 2 with 3 miscarriages with no alive issues, her first pregnancy was spontaneous conception 10 years before, confirmed by urine for pregnancy test. She remained unbooked. Then there is, throughout her pregnancy, there is a history of 1 ultrasound at 7 months of gestation. She was told small masses in the abdomen. And that pregnancy ended up at 7 months of gestation at home by Dai due to preterm delivery. And there is a history of regular uterine contractions and pain remaining 1.5 hours before the delivery of baby. And that baby was died after 1.5 months after 1.5 months due to respiratory distress. And there is no history of NICU admissions of that baby, but she gave history of good size baby, and exact weight of that baby was not known to my patient, and there was no history of any gross anomalies. Second was spontaneous conception 8 years before. She booked herself to some local LHV. Her blood and urine reports were not done throughout her pregnancy. Blood pressure was done monthly basis, which was okay. That pregnancy ended up at 8 months of gestation at home by LHV. There is history of preterm labor for 30 minutes before the delivery of that baby. That baby was died at 1.5 months of gestation due to respiratory distress. And again, there is no history of NICU admissions of second baby, but she gave history of good size baby and no gross anomalies was seen. Postpartum period remained uneventful in both pregnancies, but no history of any follow-up visits, blood pressure checkup, blood and urine reports. My patient then diagnosed diabetes 4 years ago outside the pregnancy when she gave history of polydipsia and went to some local doctor and diagnosed on oral glucose tolerance test and advised oral medications for it. After the diagnosis of diabetes mellitus, her 3rd, 4th, and 5th pregnancies happened, but she has no history of any preconception counseling, any workup of diabetes during and before that pregnancies, and control of blood sugar level. Her 3rd, 4th, and 5th pregnancies was spontaneous conception confirmed by urine for pregnancy test, but no history of ultrasound, blood, and urine reports during these pregnancies. She did not book herself during these pregnancies. Her 3rd and 4th pregnancies were ended up first trimester complete miscarriages and not followed by evacuation of retained product of conception. And 5th pregnancy was incomplete miscarriage followed by evacuation of retained product of conception by LHV at private her clinic. And postpartum periods after all miscarriages remain uneventful, and she did not give history of any follow-up visits, cytogenetic and histopathological evaluations of retained product of conception, and any blood reports in between the pregnancies, and any expensive tests 12 weeks apart, and no history of any subcut injections during first trimester of any pregnancies and tablet loperin intake. And she has no history of hypertension, thyroid, cardiovascular disorders, chronic liver disease, chronic kidney disease, severe anemia, epilepsy, high-grade fever, leg swellings with pain, joints pain, photosensitivity, any non-uterine anomalies, family history of birth defects, and stillbirth babies, and recurrent miscarriages and thrombophilias in the family, hirsutism, acne and weight gain, heat and cold intolerance. Her first scan on which mass abdomen was diagnosed was done during first pregnancy. Now she came to private hospital for evaluation 15 days before, where on ultrasound large size 2 masses in the abdomen was seen, and she was referred to this hospital for proper evaluation and surgery. Here her ultrasound and reports were done. She was told for surgery for the removal of these masses, but exact nature of the disease, operation, its complications, its impact on her fertility, and further workup was not known to my patient. My patient has one history of one evacuation of retained product of conception 4 months before,
There is no other surgical history. And she is diabetic for 4 years and taking oral hypoglycemic agents, no other chronic illness in my patient. Her brother is diabetic, taking oral hypoglycemic agent, and no other disease, hypertension, cardiac, thyroid, asthma, and any other chronic illness in the family, and same problems in the family. And she is non-smoker, non-addict, with appropriate diet and sleep, and normal bowel and bladder habits. My patient belongs to a family of low income. Her husband is Imam Masjid with monthly income of 10,000. Fulfilling her basic life necessities very difficult. A young, well-nourished lady of BMI 26, well-oriented in time, place, and person, sitting comfortably on couch, answering my question cooperatively with no pillar, chylomicronia, clubbing, jaundice, cyanosis, having pulse 80 per minute, blood pressure 130 by 80, temperature 98 degree Fahrenheit, respiratory rate 16 per minute. All accessible lymph nodes and thyroids are not enlarged. Breasts are bilaterally symmetrical with no lump in any four quadrants. Nipples are everted with no abnormal nipple discharge seen. Trachea is central with normal vesicular breathing in all lung fields. Lungs bases are clear. First, second heart sounds are audible with no added sounds. Apex street is felt in fifth intercostal space, medial to mid-clavicular line on inspection. Flabby abdomen moving with respiration, centrally placed inverted umbilicus, hernial orifices are intact. On palpation, soft, non-tender abdomen, a 20-week size mass in hypogastrium and umbilical region with irregular margins, firm inconsistency, mobile from side to side, smooth surface, overlying skin not attached to mass, and with the normal body temperature, lower limit not reachable. Flanks are resonant on percussion, no visceromegaly, no bruit on auscultation. On pelvic examination, on inspection, normal pubic hair distribution with normal vulva vagina. Per speculum examination, cervix looking normal with no discharge seen. On bimanual examination, uterus 20-week size with irregular margin, firm inconsistency, mobile from side to side, bilateral adenexa clear. बस मैम केस समरी बता दूं इन्वेस्टिगेशंस पहले hello Investigations. so ma'am I want blood group with RH factor Blood group A positive. I want full blood count with recent date, hemoglobin gram per deciliter. Hemoglobin 7 gram per deciliter. TLC platelets normal. I want MCV, MCH or MCHC. Decreased. I want peripheral film. Not available. I want serum ferritin. Not done. I want random blood sugar level. Why you need random blood glucose level? I want ma'am oral glucose tolerance test as she has a history of oral glucose tolerance test, but 4 years before. तो वो वाला अब आपकी मैनेजमेंट को कैसे चेंज करेगा? Is she diabetic or not? He is diabetic. She is diabetic. Then why you want OGTT now? फिर मैम रैंडम भी ना मांगे बस I want last 24 hours blood sugar level. What is justification for your in hospital? Your patient now? For the confirmation. All they are stupid who are treating her for the last 4 years for diabetes. Yes, ma'am. Or ma'am HB. Ma'am, I want a renal function test as she is diabetic for 4 years. Normal. Okay, blood pressure record in hospital. अभी तो आपको भरोसा नहीं आ रहा था कि वो डायबिटिक है या नहीं है, उसका जीटीटी तो पूरा करना था. नाउ यू आर आस्किंग फॉर नेफ्रोपैथी. यस मैम नहीं मांगना वो जीटीटी. ठीक HbA1c मांग लेंगे और लास्ट 24 आवर्स ब्लड शुगर लेवल और रेनल फंक्शन टेस्ट. एनीथिंग एल्स यू वांट? ECG fundoscopy. Where you want?
as she has a diabetes for 4 years, maybe more than 4 years, remain undiagnosed. Is ECG recommended for screening in diabetic patients? मैम आवाज नहीं आई है. Yes मैम. ECG recommended for screening in diabetic patients. मैम हम तो करते हैं. आपने इसका रेफरेंस ढूंढा डायबिटिक में स्क्रीनिंग के लिए ईसीजी कब करनी है. ठीक है मैम. और मैम फंडोस्कोपी मांग लेना. फंडोस्कोपी करवाओगे आप? मैम एप्स की स्क्रीनिंग पता नहीं अब ये मांगनी है नहीं मांगनी. विच स्क्रीनिंग? एंटीफॉस्फोलिपिड स्क्रीनिंग. मैम ये मुझे पता नहीं है मांगनी है नहीं मांगनी क्योंकि 3 कंसेक्टिव मिसकैरेजेस है इसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर. Okay, we'll discuss later about this. Okay, I want transvaginal ultrasound. TVS is normal. नॉर्मल है मैम. फाइब्रॉइड थे इसके 20 वीक साइज यूट्रस. बेटा एक सेकंड. 20 वीक साइज पे आपने टीवीएस करना है. Why you want TVS in this way? दोनों पहले एक अल्ट्रासाउंड. But you want to see on abdominal ultrasound. See endometrial pathology, its regularity, focal lesion. Abdominal ultrasound पे क्या देखना है? Abdomen में I want to see KUB also, kidney ureter bladder, and its mass as it is in abdomen, 20 week size mass, maybe it's origin from the ovary. When we go for TVS? Sorry ma'am, TVS नहीं करना ना, abdominal pelvic का. Okay, ultrasound we'll discuss later. Okay. My provisional diagnosis is para 2. Summary. Okay, 40-year, para 2 with 3 miscarriages with no alive issue. First 2 preterm deliveries at 7 and 8 months of gestation and was died due to respiratory distress. Last 3 first trimester miscarriages and last one ended up an evacuation of retained product of conception 4 months ago. She is non-diabetic for 4 years, taking oral hypoglycemic for it and not regularly, and her blood sugar level was not known. पता नहीं ये कहना है summary में नहीं. Sorry ma'am ये नहीं कहना. And during any with her BMI of 26 on bimanual examination, 22 week size mass, firm inconsistency, irregular margins, mobile from side to side. Okay, what is your provisional differential diagnosis? Differential? Ma'am, my patient is as para 2 with 3 miscarriages with recurrent pregnancy losses due to diabetes mellitus and fibroid uterus. Okay, what is your provisional diagnosis? My provisional diagnosis is diabetes mellitus, recurrent miscarriages and preterm deliveries due to diabetes mellitus, uncontrolled blood sugar level. हिरा इसमें एप्स की नहीं करवाएंगे हम क्योंकि देखो एप्स में तब हम कहते हैं जब एनाटॉमिकल और बाकी सारी रीजन हम रूल आउट कर देते हैं. आपके पेशेंट में तो फाइब्रॉइड है. रीजन 3 consecutive unexplained first trimester miscarriages है. अनएक्सप्लेन कैसे हो गए? फाइब्रॉइड खुद भी तो बता रहे हैं आप. अभी हमने पता तो नहीं किया ना, डायबिटीज तो है. अब वो हाँ तो डायबिटीज भी तो रीजन है ना एक. चलिए देख लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं. एज भी है मेरे डीडी में. डीडी में तो है ना एज 40 ईयर. लास्ट वाला 4 months बिफोर. नहीं डायबिटीज की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाएगी.
प्रीटर्म डिलीवरी में वो कहते हैं गुड साइज बेबीज थे। क्या पता अनडायग्नोज डायबिटीज हो और पोली हो। अनबुक्ड रही है, एलएचवी से चेक कराती रही है। पोली तो बताया होगा ना, अगर बताया। स्कैन पहले वाला जो स्कैन है वो कहती 7 मंथ पे ही किया था उसने, और उसने कहा था अंदर मैसेज हैं, और जब डिलीवर हुआ तो गुड साइज बेबी है। कहती वो जो मैसेज बताए थे फाइब्राइड ही थे, मैस छोटे छोटे थे, मैस इसका मतलब बहुत मैस छोटे तो छोटे, था ना 10 साल फिर। पहले, 10 साल पहले। नहीं तो अब उसके ऐसे ही आ आपके इस सकता है। पेशेंट में, इसके स्कैन में थे फाइब्राइड के नहीं थे इस पेशेंट में बड़े बड़े 2 ओरिजिनली? फाइब्राइड है, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल 6 into 7 centimeter। What is your provisional diagnosis? Ma'am, my prenatal diagnosis both para 2 with 3 miscarriages with recurrent pregnancy losses due to diabetes and fibroid uterus. Then why you want a workup of APLS in your patient? As she has 3 consecutive miscarriages. Why fibroid because of miscarriages? Yes, fibroid भी हो सकते हैं मैम। Not because of her miscarriages. What is difference between miscarriage due to diabetes and miscarriage due to APLS? Ma'am, due to diabetes, miscarriage is uncontrolled blood sugar level in the diabetes, and anomalous fetus, and as glycosylated hemoglobin it has a decreased oxygen carrying capacity, which supplies decreased blood. Not diabetic. Patient just comes to you with history of miscarriages. How on the basis of history you will determine that these miscarriages are due to, can be probably due to diabetes or probably due to APLS? On the basis of history, she gave history of good size babies in first and second preterm deliveries, and that were died due to respiratory distress syndrome, diabetes. In case of diabetes, complications of the diabetes, good size babies and respiratory distress is the cause of uncontrolled blood sugar level. And maybe she remained she has undiagnosed diabetes at that time. And first trimester 3 miscarriages before 4 years. She has diagnosed diabetes, and after diagnosis of diabetes, there is 3 miscarriages, consecutive miscarriages, but she gave no history of any workup for control of blood sugar level and any वो जो हम मैम कराते हैं. So what is a probable cause of her miscarriages? On the basis of history and examination. On the मैम मुझे तो डायबिटीज लगती है. Then why you are asking for APLS? मैम इस पे मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं मांगने हैं या नहीं मांगने. मेरे ख्याल में नहीं मांगने चाहिए जब एक प्रॉपर चीज नजर आ रही है. In this question, what was cause of her preterm delivery? Preterm labor is maybe this is the cause of fibroid uterus and diabetes both. As 10 years before, during her first pregnancy, on there is a history of one scan at the gestational age of 7 months, where small uterine masses was diagnosed on ultrasound. Maybe fibroid is the cause of her preterm deliveries, and good size babies is the cause of preterm delivery. As there is a undiagnosed diabetes, maybe she has a polyhydramnios at that time, and मैम हो सकता है कि पोली भी हो साथ गुड साइज के साथ. She have not conceived for the last 4 years. Last? Her last miscarriage was 4 years ago. Why she have not conceived? No, ma'am, 4 months. Ma'am, 4 months ago. Okay, 4 months ago. Okay, now how will you manage? I need ultrasound to manage my patient first of all. Ma'am gave me abdominal pelvic ultrasound. You need an ultrasound. I want to see fibroid, any uterine pathology, endometrial pathology, myometrial pathology, any adenexal Multiple pathology. uterine fibroids.
Endometrium is normal and bilateral ovaries are also normal. Yeah, either it is a intramural fibroid, Intramural submucosal, or fibroids. Intramural. distorting cavity or No, not. no. मैम any uterine anomaly? Uterine anomaly मैम पूछेंगे No स्कैन पे? uterine anomaly. पूछ लो. ठीक है. Any polycystic No, ovaries? ovaries are normal. Why polycystic ovaries? PCO is the cause of PCO is the cause of miscarriages. How PCOS causes miscarriages? पता नहीं. Okay, you need to find out it today and share in group. ठीक है. Is there any history of PCOS in your patient? No ma'am. Any examination finding wait. suggesting of PCOS? But her BMI is 26. Any other feature बस BMI. suggestive of PCOS? Is BMI No. included in criteria of PCOS? No ma'am. वेट गेन की हिस्ट्री होती है उसमें, लेकिन वोटरडम क्राइटेरिया में नहीं है. Then इसे कहते हैं आप बैल then में मुझे मार, फाइब्राइड भी छोड़ के, डायबिटीज भी छोड़ के, और ये सारा टाइम पीसीओएस का वाइवा होता रहेगा और पेशेंट के फाइब्राइड नहीं रह जाएंगे, मैं वापस आ जाऊंगी. यस मैम नहीं मांगूंगी पॉलीसिस्टिक और नाम भी नहीं लेना इसका. ये आपने ढूंढना है आज, पहले बताना है ग्रुप में. हाउ पीसीओएस कॉज रिकरेंट मिसकैरेजेस. ओके ठीक मैनेजर. है. First of all, I will keep my patient admitted and counsel her that the cause of her recurrent miscarriages is diabetes mellitus and fibroid uterus both, and her age. And I will counsel that with the डॉक्टर control रीना, of एक blood क्वेश्चन sugar. रह गया. डिफरेंस बिटवीन मिसकैरेज बाय डायबिटीज एंड एपीएलएस, वो नहीं बताया अभी तक आपने. इफ शी वाज हैविंग ऑल द APLS थ्री में तो मिसकैरेजेस, नहीं आपको APLS हिस्ट्री पे कैसे पता चलेगा कि ये डायबिटीज से मिसकैरेजेस हुए हैं या एपीएलएस से हुए हैं? मैम पेशेंट में miscarriages कोई होते हैं फाइब्राइड सिर्फ ना हो. डायबिटीज. मैम ये जो है ना APLS वाला, मेरे ख्याल में उसमें कार्डिक एक्टिविटी नहीं आती. मैम इसका ढूंढ के बताऊंगी. मेरे ख्याल में इसमें कोई वो चक्कर होता है मिसकैरेज या कार्डिक एक्टिविटी का. आपकी दूसरी असाइनमेंट है ये, आज रात को आपने करके सोना. ठीक है मैम. ओके मैनेजर. Okay. First of all, I will keep my patient admitted and counsel her that the cause of her recurrent miscarriages is diabetes mellitus, fibroid uterus, and her age, as she is 40 years. And I will counsel that with control of blood sugar level and removal of the fibroid through the myomectomy, I will manage her. We cannot say 100% cure rate of recurrent pregnancy losses after my management, as her age is 40 years. This is a non-modifiable factor. In this age, 25% risk of miscarriages. I will control her blood sugar level through diet chart, exercise, and if not control, will add medication, and to prevent her from hypo or hyperglycemia. And I will give her GnRH for through Zakat fund for 3 months for the shrinkage of her fibroid. And to prevent her from hysterectomy due to hemorrhages. Meanwhile, I will counsel her the range of her blood sugar level should be between the 72 to 126 milligram per deciliter before entering into the pregnancy. So use of contraception till her blood sugar level are not fully controlled, and I will counsel her fetal-maternal complications of uncontrolled blood sugar level before and during pregnancy. HbA1c is 8.2. For how long you will offer her contraception? Till her blood sugar level within the normal range as Okay. 72 to 126. Okay then. And I will counsel her about pre-conception counseling and remained booked throughout her pregnancy. बाजी In जो उसका pre-conception counseling, फाइब्राइड पड़ा है उसका अभी कुछ करना है या नहीं करना? मैम उसको मैंने GnRH दे दिया फाइब्राइड के लिए 3 मंथ के लिए, और इसी 3 मंथ में मैं फिर ये काम तो करूंगी. अभी जब वो GnRH ले रही है तो कॉन्ट्रासेप्शन अलहदा देनी है उसे. मल्टीपल यूटाइन फाइब्राइड्स है. व्हाट इज साइज ऑफ लार्जेस्ट फाइब्राइड? पता चले GnRH के बाद कोई मिले ही ना फाइब्राइड मायोमेक्टमी के लिए, और फिर उसे प्रेगनेंसी अलाउ करो तो दोबारा यूट्रस 20 वीक साइज हो जाए.
कितने वीक साइज मैम फाइब्राइड पे हम जीएनआरएच देते हैं और कितने वीक साइज फाइब्राइड पे जीएनआरएच नहीं देते। जो छोटे फाइब्राइड है वो अगर ऑब्सलीट हो गए 2-3 सेंटीमीटर वाले यस मैम और थे भी इंट्राम्यूरल, फिर कैसे ढूंढेंगे आप? व्हाट इज साइज ऑफ मैम लार्जेस्ट फाइब्राइड इन योर पेशेंट? मैम ये 5-6 सेंटीमीटर का आगे पड़ा था और आपने एक तो पूछा ही पोस्टीरियर नहीं वॉल में। है। यस मैं आपसे नहीं अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म किया या नहीं किया? नहीं किया मैम। क्यों नहीं किया? ये आपकी थर्ड असाइनमेंट है। एट विच साइज ऑफ फाइब्राइड वी ऑफर मैम ये ना ये इस पे हमने बड़ी बहस की थी कि ये जीएनआरएच किस साइज पे देना चाहिए, ये हमें नहीं पता, हमने ढूंढा भी था। इसमें ये है ना कि जो आपके छोटे फाइब्राइड्स है ना 2-3 सेंटीमीटर के, दे कैन बिकम इनविजिबल बिफोर मायोमेक्टमी। अगर ये मल्टीपल है और लार्जेस्ट कोई 2-3 सेंटीमीटर का ही है, कोई 5-6-8 सेंटीमीटर का नहीं है, तो इस पे आपका जीएनआरएच बनता भी है या नहीं बनता? ऑलरेडी वो 40 ईयर हो गई है, उसे मजीद 3 महीने आप जीएनआरएच दे के भेज रही हैं, फिर 3 महीने आपने उसे पोस्ट मायोमेक्टमी में कंसेप्शन अलाउ नहीं करनी। मायोमेक्टमी के बाद कितनी देर बाद कंसेप्शन अलाउ कर सकते हैं? 3 मंथ। 6 महीने तो आपने उसके इस तरह ज़ाय किए और फिर आपने छोड़ना भी उसे स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए 41 पे जाके वो करेगी कंसीव। तो 41 पे व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ व्हाट इज हर फर्टिलिटी, व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेजेस एंड व्हाट विल बी इंसिडेंस ऑफ 90% मोलर करेगी। प्रेगनेंसी। हाँ, तो फिर जो उसकी थोड़ी वही रही सही फर्टिलिटी और चांस ऑफ प्रेगनेंसी है वो भी उसका खत्म करवा दो इसी सारे उसमें। यस मैम, फिर मैं इसको जीएनआरएच नहीं दूंगी, मैं मायोमेक्टमी प्लान करूंगी ब्लड शुगर लेवल जैसे ही कंट्रोल होंगे। उसे अभी एडमिट करके मायोमेक्टमी करके उसे 3 मंथ के बाद कंसेप्शन अलाउ कर दें। उसके बीएसएल कब तक कंट्रोल करते रहेंगे? कितने साल हम उसे कॉन्ट्रासेप्शन देते रहेंगे? अगर ये 20 ईयर्स होती तो जरूर हम उसे घर भेजते, आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल करके हैं, जब आपका HbA1c नॉर्मल हो जाए देन आप कंसीव करें। अभी उसकी बीएसएल कंट्रोल करके मायोमेक्टमी करके 3 मंथ के बाद कंसेप्शन अलाउ कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। यस मैम, जीएनआरएच नहीं दूंगी मैम, फिर मैं इसकी काउंसलिंग करूंगी, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करूंगी अपने पास ही रख के, और जैसे ही कंट्रोल हो जाएंगे आई विल प्लान मायोमेक्टमी आफ्टर कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल। पहले भी लगता वो बेचारी पिछले 7 साल ऐसे ही डॉक्टर्स के पास घूमती रही है जिसमें से ना किसी ने उसकी मायोमेक्टमी किया ना उसका कोई बच्चा है, और वैसे ही ये 42-3 पे पहुंच जाना है उसमें। यस मैम, हस्बैंड एज 30 ईयर है, इसकी अपनी 40 ईयर है, 10 साल छोटा है शोर। तो तुम पूरा उसका कर रही हो प्लानिंग के वो दूसरी शादी कर ले। ठीक है मैम, मैं आई विल अरेंज 4 यूनिट ऑफ ब्लड विद डोनर अवेलेबिलिटी एंड टेक हर एंट्री आफ्टर midnight. All kit will be provided. Double IV line will be maintained after induction of anesthesia. I will अब perform उसकी काउंसलिंग की है फॉर हिस्टेक्टमी। व्हाट इज इंसिडेंस counseling. ऑफ हिस्टेक्टमी विद मायोमेक्टमी? Yes, उसमें भी मैम काउंसलिंग भी करूंगी. I will counsel her that removal of the fibroid through myomectomy. व्हाट वाज hemoglobin of your patient? I will correct her hemoglobin level. I will do serum ferritin first of all to type my anemia, to type the. नहीं बनता आपका जीएनआरएच। ठीक है. क्या बनता है? Any good justification for GnRH in this patient? Any candidate? नहीं बनता मैम. कोई शाहकार होगा जो जीएनआरएच देना चाहेगा इस मरीज को, इस हिस्ट्री के साथ, इस सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के साथ और इस लेवल ऑफ कंप्लायंस के साथ? कल मैंने से मना किया था ना देना, इसलिए मेरा दिल करता है आप लोगों को वीडियो कॉल करवाऊं, मैं देखूं कि बोल कैसे रहे हो ये इस तरह की सोची समझी जहालत वाली बातें। सब फर्टिलिटी भी हम तब देते हैं ना, और देखो यही सेम पेशेंट अगर आपकी 20 इयर्स होती, 25 ईयर होती, आपको कोई उसका प्रॉब्लम ना होता कि उसके पास फर्टाइल ईयर्स मौजूद हैं, फिर कोई और रीजन नहीं है, कोई बैड ऑफ हिस्ट्री नहीं है। इसकी तो कंप्लायंस इतनी पुअर है कि 7 साल से उसे पता है शी इज हैविंग मल्टीपल फाइब्राइड्स, 4 साल से उसे पता है उसे डायबिटीज है, शी इज हाईली नॉन कंप्लायंट।
यस मैम। अब मैम इसकी उसमें मैनेजमेंट अगर वो ये हो किसी तरह गरीब पहुंच भी गई है, जिसका हस्बैंड भी 10,000 महीने के कमाता है, फिर आप उसे GNRH के उस पे डाल के भेज रहे हो कि उससे तुम्हें एमिनोरिया हो जाएगा, और 40 ईयर्स वो पहले ही है। अब उसे साथ वालों ने वैसे कह देना है, अब तो तुम्हारी माहवारी बंद हो गई, अब तुम्हारे कभी बच्चे नहीं हो सकते, अब दोबारा ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी रसोली भी खत्म हो गई है, साइज ऑफ फाइब्राइड रिड्यूस हो जाएगा, एमिनोरिया भी हो जाएगा। Will she come back for follow up to you? नो मैम। और उसके सही है मैम। मैं फिर इसको ऐसे करूंगी कि मैं अब ना आपने इसकी दोबारा correction- इसकी मैनेजमेंट लिख के फिर भेजनी है। यस मैम। मैम एक मिनट मुझसे समराइज सुन ले Okay. कि मैं इसकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करके मायोमेक्टमी करूंगी, और मायोमेक्टमी के बाद मैं फिर इसको जब अब उससे 3 पहले महीने का एनीमिया ठीक करना है या नहीं करना? anemia करेंगे। I will correct her anemia with 3 unit of blood transfusion and optimize her hemoglobin level of up to 11 gram per deciliter. And after typing of anemia with serum ferritin level, and then I will consult my patient regarding the correct management, as diabetes and fibroid both may be the cause of her recurrent pregnancy losses, and I will treat both after admission of her to my hospital, and I will control her blood sugar level in consultation with the physician, and meanwhile I will prepare her for the myomectomy, and I will do myomectomy, और myomectomy में फिर उसके बाद फिर मैं post operatively 3 month के बाद Will you go for conceive dye कराना। test in your patient or not? Not, I cannot do dye test because last child born, last pregnancy 4 month before, there is no complaint of subfertility in my patient. जब तुम्हारी फ्रेंड्स ने कहना है भाई हीरा ने myomectomy करके उसकी ट्यूब्स ही ब्लॉक कर दी हैं, अब myomectomy के 3 महीने बाद HSG करोगी या नहीं, ये देखने के लिए मैंने उसकी ट्यूब्स भी ओपन छोड़ी हैं या नहीं? मैम ये भी मैंने मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। पेशेंट को सबफर्टिलिटी तो है नहीं, मुसलसल वो कंसीव तो कर रही है, करना है इसमें HSG। ये myomectomy के बाद जो ट्यूबर